Okay, so project number 5. आज का जो प्रोजेक्ट है वो कोई ज़्यादा लेट्स से अभी तक जो प्रोजेक्ट्स बनाए हमने वो सारे यूज़फुल थे इन टर्म्स के वो कुछ प्रेजेंटेबल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स थे, राइट? ऑल ऑफ देम हैड इट्स यूजेस, वीडियो प्लेयर, एक्सचेंज रेट, मूवी थिएटर, एचटीएमएल फॉर्म एंड सो ऑन. लेकिन आज का जो प्रोजेक्ट है वो उसका जो पर्पस है वो मोस्टली टीचिंग है कि ये जो एक चीज़ होती है कॉल्ड डॉम अरे मेथड्स, राइट? डॉम अरे मेथड्स में हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अरेज होते हैं उसके अंदर डेटा को कैसे हम यूज़ करके मैनिपुलेट करके बेसिकली जो भी हम काम करना चाह रहे हैं उसको कैसे करना है. There is a number of different functions. There is for each, map, filter, sort and reduce. और भी हैं but these are the main ones. ठीक है, तो आज का जो प्रोजेक्ट है उसका मेन रीज़न ये है कि हम इन फंक्शंस को अच्छी तरह से यूज़ करना सीखना. ठीक है, तो with that we'll start on project number 5. Close this. So let's create this project 5. DOM array methods. I've and then project 5. Okay, so project 5 mein we can create index.html, style.css and script.js, right? एक मिनट देगा please. Okay, so अगर हम इसकी requirement देखें project की तो किधर गया वो वाला document? This one. Okay, so अच्छा इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम एक API को कॉल करेंगे called random user dot me. इससे हम रैंडम यूज़र डेटा गेट कर सकते हैं API को यूज़ करके, राइट? तो इस API से हम इंटीग्रेट करेंगे HTML को एंड देन
उसको यूज करके हम क्या करेंगे कि जो यूजर डेटा है उसके अंदर कुछ जस्ट लाइक फेक यूजर्स का डेटा होगा और उसके अंदर उनकी कुछ इंफॉर्मेशन है लाइक कि उनके पास वेल्थ कितनी है। फिर हम उसमें से फिर सबसे पहले तो हम उसको गेट कर लेंगे कि कितनी वेल्थ है। तो लेट्स मे बी डू दिस कि इसको अगर हम चेकआउट करें। Okay, so it looks like this. Let's make sure. चेंज हुआ है कुछ, ये क्या हुआ? Sorry, let's go to uh, randomuser.me/api. Right, इसमें आप जाएंगे अगर एवरी टाइम ये नया यूजर क्रिएट करके बताएगा। ओके, तो हो सकता है मेरा एग्जांपल अब शायद ना चले, दैट्स फाइन, हम उसको इम्प्रोवाइज कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली ये हमारा एंड पॉइंट है। इट्स जस्ट रैंडम यूजर डॉट एम ई स्लैश ए पी आई। तो इसके ऊपर एवरी टाइम आप फैच करेंगे तो कोई नया यूजर डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, ये कुछ जेसन फॉर्मेटिंग है, तो इट्स लाइक की वैल्यू, राइट? तो देयर इज जेंडर इज फीमेल दिस टाइम, नेम के अंदर यू हैव लाइक व्हाटएवर, और रिफ्रेश करेंगे तो you always get a different value. Okay, so that's fine, इसको try out करेंगे। next, तो पहले हम इसको fetch करेंगे, फिर हम for each loop से हम उसका data get करेंगे। कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हम देख लेंगे उसके अंदर से fetch करके, फिर मैप फंक्शन यूज करेंगे, उस जो भी वैल्यू लाएंगे उसको उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर देंगे। कोई फिल्टर अप्लाई कर लेंगे, जस्ट टू गेट अ सर्टेन टाइप ऑफ यूजर। सॉर्ट कर लेंगे टू गेट द यूजर, मे बी हम एज को यूज कर लेंगे, एंड देन वी कैन यूज रिड्यूस टू ऐड ऑल द डेटा। अच्छा, तो लेट्स ट्राई इट आउट। लोग इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। सो ऐसा करेंगे कि विल ट्राई आउट और बॉयलर प्लेट से स्टार्ट करेंगे। let's just call it DOM array methods. Okay, यहाँ पर we need a style sheet, style dot css, and then body में we'll have a script, source script.js. oh, ये मैंने wrong file यहाँ पे चाहिए ये सब। ओके, तो that's it for that। फिर HTML content structure बना लेते हैं। we need a heading, you can say DOM array methods, okay, और फिर एक container, div container, और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे कि
जो UI है उसके अंदर will have like a sidebar. So we can use a HTML5 element called aside. Okay. और यहाँ पर हम कुछ buttons create कर सकते हैं. We have a button for with the ID add user, and then we can do like add user. I think फिलहाल इसी को start करते हैं और फिर हम लोग data को देखकर we can add more buttons. अब हम एक main create करेंगे within the container. So we have a side container जो हमारे पास side में like a left panel type का कुछ हो जाएगा और main container होगा जिसमें हमारी main body होगी. इसको हम ID कर देंगे and then main के अंदर हम एक heading 2 create कर लेते हैं और इसमें we can have like a strong element. इसको कर देंगे user और API को देख लेते हैं कि डेटा क्या आ रहा है इसके अंदर. So we getting सच है ये कि हम डॉक्यूमेंटेशन में ही देख लेते हैं. तो हमारे पास आ रहा है जेंडर, नेम, लोकेशन, टाइम जोन, ईमेल, लॉगिन, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड सेल्फ, फोन पिक्चर, nationality. Okay. Just thinking something. Random user का data नहीं real नहीं है. I think it's just auto generated kind of thing. Just 1 second मैं एक चीज figure out कर रहा हूँ कि example में हम जो information use कर रहे हैं. Yeah, that's fine. So हम ऐसा कर लेंगे कि हम लोग मैथ का ना random function use करके wealth generate कर लेंगे. Okay, तो let's go back here. यहाँ पर we can add more buttons. We can do button for ID equals double. So we'll do double money. Then another button इसको हम कर देंगे ID show millionaire. ये होगा like filter millionaires. फिर एक और बटन होगा for sorting. Sort by wealth. Okay, एक और बटन होगा इसको हम कर देंगे sum. Add all. इस तरह से कर लेते हैं. तो we'll have 5 buttons. पहला बटन क्या करेगा, API fetch करके एक random user को add कर देगा. दूसरा बटन क्या करेगा, we'll have some जो random user होगा उसकी हम कोई randomly JavaScript के अंदर random
फंक्शन आता है जिससे हम मैथमेटिकल नंबर रैंडमली क्रिएट कर सकते हैं, तो विल यूज दैट, और हम उस यूजर को कुछ लाइक अ बैंक बैलेंस कुछ उसका रैंडमली क्रिएट कर देंगे, राइट। तो फिर एक बटन आएगा जिससे हम जो भी इसका इनिशियल अमाउंट होगा उसको डबल करना सीखेंगे। हाउ कैन वी डू दैट? और वो जितने भी यूजर्स हैं सबके ऊपर अप्लाई होगा। फिर हम फिल्टर करेंगे कि जितने भी यूजर्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहे होंगे उनमें से सिर्फ सेलेक्टेड यूजर्स को शो करेंगे बेस्ड ऑन सम सिलेक्शन क्राइटेरिया। फिर सॉर्ट करेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं तो बेस्ड ऑन वैल्यू हम उसका डेटा सॉर्ट कर सकें। यू कैन डू लाइक अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एंड देन एक बटन होगा जिससे जितने भी यूजर्स हैं उन सब की जो वेल्थ फिगर है वो ऐड कर, तो समथिंग लाइक दिस। ओके। अच्छा, तो नाउ कैन कंटिन्यू मेन एलिमेंट में। लेट्स सी, इसको चेक कर लेते हैं। सो वी हैव these buttons. Okay. मेन। अच्छा, और यहाँ पर दूसरी चीज हमने यूजर आ जाएगा और इसके साथ we'll have the wealth of the user. Okay. So we'll have something like, ठीक है, तो we'll have the buttons and the user wealth. Okay. अब इसको हम स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो that's it for the HTML content. Box sizing, border box, फिर body में we just इस वाले प्रोजेक्ट की I don't really care too much about CSS. Font family can do Arial, display flex, flex direction, columns, line item center, min height 100 VH and margin 0. Okay. तो ये बॉडी का हो गया काम. Let's make sure. Okay. And then container. So container के अंदर we continue with flex. इसको we can do this. Okay, display flex.